कॉर्पोरेट दुनिया रमज़ान में चलती है और क्या औकात कार हैं, कैसे आप लोगों के रोज़े जो हैं उसमें काम की क्या तरतीब होती है। फिर हम कुछ ज़रा कुछ और टिप्स और टेक्निक्स की आज बात करेंगे, जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हाउ टू स्पीक विद एनीवन। देयर आर 92 टिप्स एंड टेक्निक्स दैट वी आर कवरिंग, और हमने एक जो है वो पहले कवर कर लिया है पिछले दिनों 2 दिन पहले। और उसमें हमने बताया था कि पहली जो टिप है अपना इम्प्रेशन बनाने की, whenever you meet someone, what is that first technique to give a long lasting impression of sincerity and loyalty। उसमें हमने बताया था कि जब भी आप किसी से मिलें, if you have to show that warm gesture, उसमें आपने क्या करना है। उसमें आपने जब ग्रीट करना है, जब मिलना है किसी से, यू डोंट हैव टू स्माइल एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, और यू हैव टू गिव अ पॉज ऑफ अ सेकेंड, फिर उसके बाद स्माइल करना। एंड दैट एक्चुअली शोज के दैट यू आर सिंसियर, दैट यू एक्चुअली कम up as sincere and loyal and dedicated to that person, because that sounds quite exclusive। और ये एक टिप है। दूसरा टिप जो है कि किस तरह आप अगले का अटेंशन ग्रैब करते हैं, एंड द सेकंड वन इज क्वाइट इफेक्टिव वन। और उसमें हाउ डू यू एक्चुअली get the attention and keep it glued to yourself and get the advantage of that meeting। By advantage, I don't mean that you have to manipulate। मेरा ये मतलब नहीं है, कतई 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 मतलब नहीं है। Hey Mr. Frank Blocks, कैसे हैं आप? Hello। उसमें ये है कि the second tip is that you have to keep your eyes locked with the other person, but sometimes you have to calibrate it a bit smartly. With both men and women, it's a bit different with men and women. You have to keep your eyes locked in corporate, of course, meetings to give an impact of dominance, connection, and being attentive to the other person। और उसमें अगर if you keep looking like glued eyesight with the other person, you keep it locked without any emotions, so that might come as threatening. So you have to calibrate it. You have to calibrate it very smartly. With women, of course, you can keep it a little stretched, but with men, of course, you'll have to calibrate. But the eye contact has to be quite very comprehensively strong and meaningful। You don't have to come up as threatening, or you just don't have to give an impression कि हाँ जी बंदा जो है he has some kind of other motive। But you should actually sound straightforward and simple, but your eyes should be glued। Now there is another concept called the sticky eyes. Now sticky eyes is that you are speaking with someone, and the way I'm actually looking in this screen, I'm looking at you, okay? I'm giving the attention to you, but if something is requires my attention, okay, I'll just look around briefly and then come back to you again। That's one thing। हाय मिस्टर फ्रैंक ब्लॉग्स, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, हेलो, हे हे हे, हेलो, गेम ओवर, आप गेम खेल रहे हैं इस वक्त हैं? अच्छा, तो ये दो टिप्स थी जिसमें आपने यू हैव टू ग्रीट समवन with a pause in your smile। You don't have to outrightly smile at the very first moment, give it a pause and then greet। And the second tip is keep a very strong contact without any ulterior motives। ये एक दूसरा वो है। And uh, to have that eye contact of you, you have to practice it, you have to calibrate it। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करें, it comes with practice। You will actually come out as quite impressive and someone that would make connections on the very go। ठीक है, अब उसमें
अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि जब आप यू कीप एन आई, जैसे एक वो मिसाल, ये मैं किस किताब से आपको ये हवाले दे रहा हूँ, हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 टिप्स एंड टेक्निक्स। उसमें उसने एक स्टोरी ये भी बताई थी कि वो किसी होटल में ऑर्डर करने गई है, तो वो उसके साथ जो कुलीग था उसे उसने ये टिप और टेक्निक बताई थी। तो उसने he kept his eye contact glued with the waiter so that he could notice and that he could acknowledge and register that, and he registered that। और फिर उसने जो है ना उसको सर्विस, अच्छी एक्स्ट्रा सर्विस उसको दी। सो अब आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, बात कर रहे हैं, कोई आपको मुसलसल अगर देख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ही इज गिविंग यू अटेंशन एंड दैट विल एक्चुअली मेक यू टू फोकस दैट पर्सन, फोकस दैट पर्सन फॉर अ स्ट्रेच टाइम। ये वो टाइम होता है जहाँ यू मेक कनेक्शन with that other person, ठीक है। That's how you make connections. That's how you actually come out to be open-minded and straightforward and quite ahead, taking the lead in communication and making connections. So अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे चैनल पे जो है ना ये चीज़ है मुतवातिर, अब हम शेयर कर रहे हैं, अब तीसरा और चौथा भी आपको हम अपने शॉर्ट्स में वो करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद आवर चैनल। और इसमें हम तीसरा और चौथा भी आज ही इसको अब वो करेंगे, जो टिप्स एंड टेक्निक्स वो शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। इसको प्रैक्टिस करें, दैट विल मेक योर लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, क्वाइट इफेक्टिव, and you would start making rich connections in your network. You will actually come out to be seen as confident, way forward of the other people, because these techniques and tips are way too important. Okay, because these actually help you to clinch deals, make negotiations confidently. You should come out and be seen as confident and friendly and loyal, and of course of benefit as well, because in corporate life, because it's give and take, it's a two-way traffic। तो आप लोग अपना बताइए कि किस तरह रमज़ान किस तरह गुजार रहे हैं, और रमज़ान में क्या तरतीब आप लोगों की रहती है, क्या सीख रहे हैं। सीखने से मुराद ये है क्या, नॉलेज एडिशन की है। ये वो महीना होता है जिसमें आपने ना सिर्फ इबादत पे ज़्यादा जोर देना होता है, क्योंकि एक महीना होता है, इट्स अ बोनस 30 days इन द होल 1 year, ठीक है। और इसमें आपने यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड and punctual with your spiritual side, with your um, uh, with your prayers, ठीक है। And you have to be very very focused in your prayers, because you have to set aside a separate dedicated time for your prayers। और ये वो चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। एक महीना होता है, बोनस का महीना होता है, जैसे सीजन्स होते हैं सेल्स के। सेल्स में जो है आपको हर चीज़ बाय टू गेट वन फ्री या बाय वन गेट टू फ्री। यहाँ पे तो बाय वन 70 फ्री है, ठीक है। सो पुट इन दैट एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर योर प्रेयर्स एंड फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, अपग्रेड योर स्पिरिचुअल साइड। हम लोग अक्सर ये चीज़ें नहीं, इनकी वो की जाती, ज़ोर नहीं दिया जाता, इस पे तलक़ीन नहीं की जाती, सच बोलना है, मामलात सही रखने हैं ईमानदारी के साथ। ये वो महीने जहाँ पे आपने ये सब करना है, ताकि आप बाकी सारा साल भी जो है अपने मामलात ठीक रखें। सिर्फ रमज़ान ही ये बोनस का महीना है, प्रैक्टिस का महीना है। इसमें आपने प्रैक्टिस भी करनी है और सारा साल उसको फिर इम्प्लीमेंट ही करना है, ठीक है। क्योंकि आप सच बोलेंगे, अपनी ज़ात के लिए बात करेंगे, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा इफ़ यू एक्चुअली आर सीन एंड are perceived as loyal and truthful and honest. Of course, you will be far more ahead than the rest of the people who have ulterior motives, other motives, or personal motives. Whenever you actually meet people, you don't have to have ulterior motives at the very first. Yes, of course, there could be mutual motives that benefits both the parties or more parties. तो ये है वो कॉर्पोरेट लाइफ के कुछ उसूल हैं जो आपके इंटरव्यूज़ में, आपके काम में, आपके क्राफ्ट में, आपके बिजनेस में, आपके स्किल में आपको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस,
ठीक है, अब 10 मिनट हो गए, हमारा फोकस ही 10 मिनट था। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट दोज इन द कमेंट बॉक्स एंड विल कम बैक टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।